Hi, everyone, and a very good afternoon. In today's lesson, as you can see right in front of the screen, we are going to be talking about how you can study for just 4 hours and crack UGC Net English December 2023. Okay, so before I dive deep into the topic, just wanted to do a quick check if am I audible and my screen is visible. So if yes, please put your please put a thumbs up in the comment section so that I know that we are good to go, and then we can start with today's video. Okay, so I can see Swati's message. Good afternoon, Swati. Uh, just comment down if you guys can see my screen and can hear me properly. If yes, then we can go ahead with the session. And I want to also know from you that how are you guys feeling? Only a few days, I would say, are remaining for the next UGC Net exam. It's less than 4 months, and the exam application form would be out anywhere in the next week or 15 days. Great. Swati says I'm audible. Sneha, and then we have Neha, we have Meenakshi, Sham, Priyanka. Good afternoon to everyone out there. I hope your preparation is going well. I have been receiving a lot of messages from students who are saying that, they are feeling a little stressed out because the exam is near. They are not able to complete the syllabus. They are not able to, feel that they have enough time to prepare. So don't worry, I am going to talk about all the topics in this particular lesson. Okay, so now that everything is in front of you, let's just dive right into the topic. In this, particular live session, I am going to also take up a few questions. But first, I'm going to quickly take you through the PowerPoint presentation. And once we are done with that, then I'm going to definitely dive deeper into the topic. Okay, so let's begin with the first topic, that is to restrict your resources. Now, this is a very, very important point. I want that all of you who are watching this live right now should have a pen and paper handy with you, and you should be writing down this on top of your page that you have to restrict your resources. See, what happens with most of the students is that they start by maybe by referring to one particular guidebook, and 15-20 days ho gaye, they have read something or the other from the guidebook, and then suddenly there is a phase where one friend calls and says कि अरे यार ये guidebook तो अच्छी नहीं है, I'll recommend you some other online resource, or maybe a coaching institute, or maybe any telegram group from where you can get a lot of other material, and the student gets distracted and he goes to the you know to that particular resource, because of which a lot of haphazard preparation happens. I'll explain you why, but before that, I can see a lot of questions from World of Varanasi who says, ma'am, please cover syllabus of BHU second year English essay and literature. So just wanted to tell you that this today's topic is exclusively for UGC Net December 23. So I would not be able to address your question, but definitely I'll shortly make a video on it. Also, just a quick time check. It is right now, I think it is 16th September, Saturday, 2 o'clock and 35 minutes. So we'll be having about an hour long session where we'll talk about all these things very, very quickly, and I'll try and finish the PPT in like next 15-20 minutes so that I can take up a few questions from you people. Okay. Right. So the first thing that you have to remember is that research and choose the perfect books or website that you would want to refer for the exam preparation. So the very first thing is कि सब कुछ भूल जाइए अगर आपने अभी तक प्रेपरेशन चालू नहीं करी है या कर दी है. सो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, एंड उनमें से यू चूज द परफेक्ट बुक दैट you would want to study from, or the perfect website or a perfect coaching class from where you want to study from. Why I am telling you to choose it right now is because whatever you choose today,
you are going to stay with that for the next 3.5 months. You are not going to change the resource. A lot of students do this mistake is उन्होंने पढ़ना किसी बुक से चालू किया, विलियम जे लॉन्ग शुरू करी, 20 पन्ने पढ़े, अचानक से राउटलेज पे शिफ्ट हो गए, वहां से 20 पन्ने पढ़े, फिर अरिहंत की गाइड बुक ले ली, उससे थोड़ा पढ़ा, फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, एंड इतनी खिचड़ी मच जाती है कि ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू डोंट नो आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है. यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ कंप्लीशन इन योर हेड. इसीलिए वेरी फर्स्ट थिंग इज कि लिस्ट बना लीजिए बुक्स की, वेबसाइट की, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी मटेरियल आप जहां से पढ़ना चाहते हैं, एंड देन सेलेक्ट एनी वन and then stick to it. Don't go here and there. That is a very, very big blunder that any student can do. Secondly, don't doubt your choices. होगा क्या कि nowadays I'm investing a lot in a lot of asset classes. So होता ये कि when you meet a lot of investment advisors, सब आपको अलग अलग एडवाइस देंगे. कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा रियल एस्टेट खरीद लो, कोई बोलेगा ये कर लो, वो कर लो. अब अगर मैंने एक असेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया, सपोज मैंने एक लैंड खरीद ली कहीं पे, और मेरे को अचानक से किसी ने आके बोला, अरे यार वो तो बहुत गलत था, तुम तो वहां से हटाओ और दूसरी जगह खरीदो. इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस, डू यू थिंक आई विल एवर बी एबल टू अर्न एनी रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट? इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, दैट आप जब जब एक रिसोर्स को छोड़ के, आधा छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट होते हो, आप कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते. इसलिए अगर आपने पहले एक रिसर्च करके आप एक फाइनल लेआउट बना लीजिए कि आपको कौन से बुक्स या रिसोर्सेस को फॉलो करना है, पूरी रिसर्च कर लीजिए, अपने आपके साथ 2-3 दिन बैठिए और फाइनल कर लीजिए कि अच्छा मुझे इस बुक की लैंग्वेज समझ आ रही है तो मैं इस बुक से पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड इस बुक से पढ़ रहा है इसलिए मुझे इस बुक से पढ़ना चाहिए. आई डोंट थिंक इट इज द राइट वे टू चूज अ रिसोर्स. आपको वो रिसोर्स चूज करना चाहिए जो आपको सबसे अच्छे से समझ आ रहा है, जो रिसोर्स पे आपको कॉन्फिडेंस है. देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज इन द इंटायर वर्ल्ड. हर इंसान के लिए कुछ अलग डिजाइन है. हो सकता है मुझे किसी एक बुक से समझ आए, दूसरे को नहीं आए. देयर आर पीपल हु से कि पीटर वेरी से हमें लिटरेरी थ्योरी समझ आती है, मुझे कभी नहीं आई पर्सनली, मुझे उससे बेटर एम ए आर हबीब की बुक लगी है. हो सकता है किसी और को एम ए आर हबीब की बुक बिल्कुल अच्छी ना लगे. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, टू ईच इज ओन. सो इसीलिए अगर आपको ये चेक करना होगा सबसे पहले कि आपको कौन सा बुक या कौन से रिसोर्स से समझ आ रहा है. जिस भी रिसोर्स या बुक से आपको चीजें समझ आ रही है, उस रिसोर्स को फाइनल कर लीजिए, एंड देन throughout your preparation please don't doubt your choices. It is extremely crucial. एक बार अगर आपने एक चीज पकड़ ली तो अब आप उसके साथ आगे बढ़ जाइए. बार बार ये मत सोचिए अच्छा मैं वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा. Nobody can ever complete the syllabus अगर वो बार बार अपनी दिशाएं चेंज करता है. जस्ट थिंक अबाउट दैट हॉर्स जिसके यहाँ पे ना ब्लाइंड्स होते हैं, वो सिर्फ सीधा दौड़ता है, वो नहीं देखता यहाँ क्या है यहाँ क्या है, और तभी वो रेस जीत पाता है. तो जितने भी रेस के हॉर्सेस होते हैं दे ऑलवेज गो स्ट्रेट. वो ये नहीं देखते अच्छा मेरा पास वाला कितनी तेज भाग रहा है, मेरा इधर वाला. उनको ये पता है मैं यहाँ हूं और मुझे यहाँ पहुंचना है, एंड दैट इज देयर जर्नी. ओके, one very important thing that you need to understand is the difference between toppers and those who fail in this exam. I have seen from my past experience, I have been in this industry teaching UGC net aspirants from past 6 years, and in 6 years I have taught more than 10,000 students, and उनमें से जितने भी students ने टॉप किया है और जो टॉप नहीं कर पाए हैं, जब भी मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ तो एक चीज मैंने हमेशा देखी टॉपर्स में, दे ऑलवेज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. आपको लगेगा टॉपर्स को पता होता है हमने ये 3 बुक्स रेफर करी थी, हमने इस टॉपिक के लिए ये बुक रेफर करी, या हमने आपका कोर्स ज्वाइन किया हमने और कोई बुक रेफर नहीं करी, या हमने इस पर्टिकुलर इंसान का या इस पर्टिकुलर टीचर के नोट्स लिए या कोर्स ज्वाइन किया और हमने और कुछ रेफर नहीं किया. whosoever you choose, that is absolutely up to you. But एक इंसान को चूज कर लीजिए. उस टाइम पे चूज करने से पहले डू योर गुड रिसर्च, डू अ गुड रिसर्च एंड फाइंड आउट कि आपको कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है. डेमो लेक्चर्स देखिए, वेबसाइट विजिट करके देखिए, सब कुछ एक्सप्लोर करिए, एंड वंस यू हैव फाइनलाइज्ड इट देन stick to that particular teacher, stick to that particular website or that particular book. फेलियर्स मोस्टली ये करते हैं, उन्होंने 5 जगह के कोचिंग क्लासेस ले लिए, 15 बुक्स ले दिए, 10 वेबसाइट ले लिए, अब उनके पास इतना बड़ा समुंदर हो गया है दैट दे डोंट नो कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. हो सकता है आप में से बहुतों को लगे कि यार
इससे क्या होगा, इससे क्या हम 4 घंटे पढ़ के नेट क्लियर कर पाएंगे? हाउ इज इट रेलिवेंट टू द टॉपिक दैट that this lecture is all about? That just study for 4 hours and crack UGC Net English December 2023. It is absolutely relevant. बिकॉज जब आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते ना, आपने बहुत सारे बुक्स ले लिए, बहुत सारी वेबसाइट्स ले ली, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लिया, अब आपके पास इतना रिसोर्स है कि सिर्फ उसको एक बार पढ़ने के लिए आपको दिन के 16 घंटे चाहिए और आपको 1 साल तक पढ़ना होगा, तब जाके तो आप एक बार उतना सिलेबस कवर कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ के क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स लेना है जो आप 4 आवर्स पढ़ के 3 महीने के भीतर कवर कर पाए एंड देन आप रिवाइज कर पाए। तभी आप क्लियर कर पाएंगे दिसंबर 2023 का नेट। आप बहुत सारे बुक्स वेबसाइट से शेक्सपियर को पढ़ भी लो, लेकिन क्वेश्चन तो एक या दो ही आएगा शेक्सपियर पे। आपको ये समझना होगा कि यू आर नॉट डूइंग अ पीएचडी ऑन विलियम शेक्सपियर, यू आर प्रिपेयरिंग विलियम शेक्सपियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। सो आपके पास बहुत सारे राइटर्स हैं। इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट मी शो यू। सो just for, you know, okay, just for your reference, I'll show you something. So if you go to the website and you check the full course syllabus, you will find out that there are numerous writers, like numerous. This is just British literature I'm talking about, and the list goes on and on and on. So many writers are there in जस्ट ब्रिटिश लिटरेचर। और आप सोचिए, अगर आप हर एक राइटर को, फॉर एग्जाम्पल एडमंड स्पेंसर को, अगर आप 5 वेबसाइट से पढ़ने लग जाए एंड 5 बुक से पढ़ने लग जाए एंड 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस या ऑडियोज या नोट से पढ़ने लग जाए, तो आप क्या इतनी बड़ी लिस्ट कवर कर पाएंगे? क्योंकि हो सकता है एडमंड स्पेंसर पे आपकी मास्टरी हो जाए, बट सिर्फ एडमंड स्पेंसर तो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ जॉन डन तो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इंस्टेड ऑफ दिस is that you need to play smart. And how do we play smart? We play smart when we restrict our resources. We refer to one source जिससे हम सब कुछ पढ़ के कंप्लीट करते हैं, तभी आप रिवाइज भी कर पाएंगे। Okay, I hope this point is clear. If yes, then just put in the comment section that you agree or disagree with tip number 1, and then I'm going to move forward to tip number 2. Okay, so I'll be waiting for your reply. Mariam says to restrict our resources, I think analyzing PYQs is extremely helpful. You get to know what and how is asked. Absolutely, Mariam. Like, I 100% agree to this. And that is the reason why, even in our online course, if you see, after every writer that we are teaching, we have a special section where we talk about all the previous year questions that have come from that particular topic. Why? So that you know कि इस राइटर को इतना ही पढ़ना है। Because most of the time क्या होता है कि हम suppose we are teaching one particular writer, अब उसके हमने 4 वर्क्स पढ़ाए हैं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैम इसके तो 12 वर्क्स और है, क्या वो सारे 12 वर्क्स पढ़ने हैं? I'll just give you an example since you've asked this question. So this is the online course, okay, that we have for paper 1 and paper 2. And suppose I go to British literature, okay. Now if I go here to, let's say, any age we can go to, let's say we go to Victorian age, okay. Now in Victorian age, if you go, you will see that there are so many writers. Now a lot of people would say कि अच्छा आपको suppose we are talking about Alfred Lord Tennyson, तो इनकी इतनी सारी पोएम्स हैं, इनमें से कौन सी पोएम्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप स्पेसिफिकली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सो अगर हम बात करें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, सो माइनर वर्क्स हम पढ़ाते हैं, देन वी हैव यूलिसिस, लोटस ईटर्स एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक। दीज आर द 3 पोएम्स जिनको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बाकी उसे नहीं पढ़ना है। दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि प्लीज, अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं, आप अपने आप से पढ़ रहे हैं, प्लीज गो थ्रू दिस लिस्ट फ्रॉम द वेबसाइट एंड चेक आउट कि किन किन राइटर्स को पढ़ना है। अगर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात हो रही है तो कौन कौन से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के ऑथर्स को आपको पढ़ना है। बिकॉज अगर आप देखें तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में देयर आर सो मेनी ऑथर्स। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इतने सारे मिलेंगे। वाई वी हैव सिलेक्टेड ओनली दीज 10?
बिकॉज इन 10 से ही रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं यहाँ पे आज गूगल पे डालू अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, so you will see there are 42 more. Okay, so these are the African American writers. इनमें से we have selected only 10. Why? Because यहाँ से सबसे ज्यादा questions आ रहे हैं. अभी हम आगे टिप नंबर 3 में बात करेंगे एक बहुत ही important टिप की, जिससे आपको और क्लियर होगा that why am I saying that you should only focus on doing a limited number of writers rather than doing everything, because revision then becomes very very difficult. बिकॉज आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आप रिवाइज कैसे करेंगे. ओके, सो आई होप आई आंसर्ड मरियम योर कमेंट. ग्रेट. सो यस, okay, great. Vijaya says agree ma'am, absolutely fine. So now let's move on to tip number 2. Tip number 2 is one of my very favorite principle, which is applicable I think in every aspect of life, and this is what separates people who are extremely rich, extremely successful, extremely talented from the ones who are not so rich, not so successful, average, mediocre जिंदगी जो काटते हैं, उनको अगर कुछ separate करता है तो that is the Pareto principle, 80-20 rule. Now this principle, if I just go back in the history and talk about where did this origin from, so this principle came from a man called Pareto. He was a resident of Italy and he did a survey in Italy back in 1990s, 1900s, where he, after doing the survey, he found out that only 3% people in Italy own 97% land in Italy. So he was able to understand कि इटली की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उनमें से जो टॉप 3% रिच पीपल है वो इटली की 97% लैंड ओन करते हैं. एंड फ्रॉम हियर ही केम आउट विद दिस 80-20 रूल. What is this 80-20 rule? The 80-20 rules in general says that 80% dominates 20% dominates 80% of the thing. That means 20% चीजें होती है जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. 20% एफर्ट डाल के आप 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, जैसे let's take some simple examples from your day-to-day life before we dive into how you can use this principle in your studies. So let's suppose we are talking about 20% clothes. So if you open your wardrobe, you'll see there are, let's say, 100 clothes. Out of those 100 clothes, there are 20 clothes that you wear 80% of the time. There are 80 clothes जो आप बहुत occasionally, बहुत rare पहनते हैं. 20% clothes है जिन्हें आप 80% बार पहनते हैं. देन अगर आप किचन में जाते हैं तो 20% स्पाइसेस है जो 80% डिशेस में यूज होती है. मतलब हर डिश में कुछ 20% स्पाइसेस है, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी. ये कुछ ऐसे स्पाइसेस है जो हर डिश में जाएगा. आप कुछ भी बना लो, आप बिरयानी बना लो, आप सब्जी बना लो, आप दाल बना लो, वट एवर यू मेक. 20% ऐसे स्पाइसेस है जो 80% डिशेस में यूज होते हैं. 20% ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी कंपनी के जो उसको 80% प्रॉफिट देते हैं. आप कोई भी कंपनी ले लो, HUL ले लो, वर्लपूल ले लो, हेवल्स ले लो, कोई भी कंपनी आप ले लो, उसके आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकालो. 20% ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो 80% प्रॉफिट देते हैं उस कंपनी को. हर प्रोडक्ट सेम प्रॉफिट नहीं देता. इवन इफ यू लुक एट नेस्ले, नेस्ले का किटकैट इज एक्सट्रीमली फेमस. नेस्ले के हो सकता है 10 चॉकलेट्स हो, बट किटकैट जितना रेवेन्यू देता है नेस्ले को उतने बाकी चॉकलेट्स नहीं देते. 20% कंपनीज है इंडिया की जो 80% जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है. द टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 अगर आप देखोगे, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है, उनमें से टॉप 50 कंपनीज जो है वो 80% जीडीपी ग्रोथ का हिस्सा बनती है. आज अगर आप सब छोड़ दो, जियो देख लो, one company that is such a big component, that holds such a big component in the entire GDP. HDFC बैंक देख लो, it is one bank, but 80% लोगों के अकाउंट HDFC बैंक में है, SBI बैंक में. So what does Pareto principle says कि throughout the world 20% चीजें हैं जो 80% चीजों को डोमिनेट करती है. 20% क्लोथ्स जो आप 80% टाइम पहनते हो, 20% स्पाइसेस जो आप 80% डिशेस में यूज करते हो, 20 प्रोडक्ट्स जो आपको 80% प्रॉफिट देता है, 20 कंपनी जो 80% जीडीपी ग्रोथ में हिस्सा लेती है. नाउ
डिफरेंस कहाँ आता है? अब अगर हम इस पूरे परेटो प्रिंसिपल की समरी देखें, सो द डिफरेंस इज बिटवीन द अचीवर्स एंड द लूजर्स. जो अचीवर्स होते हैं लाइफ पे किसी भी एरिया में, दोज हु आर अचीवर्स, दे पुट इन 20% एफर्ट in places which give 80% result. Losers, on the opposite hand, do opposite of this. They put 80% efforts in areas which give only 20% result. Okay, 20% एफर्ट आप दो, 80% रिजल्ट मिलेगा. 80% एफर्ट दो, सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेगा. अगर आपने ये थियोरी समझ ली, आई थिंक यू कैन सक्सीड इन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ. Just get that 20% right. 80% issue solve हो जाएंगे. Let me tell you one very simple thing. Water intake in a day is a very, very simple thing. कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है. वाटर इनटेक अगर आपका सही होता है तो लिवर, किडनी, कितनी सारी बीमारियां हैं जो आपको लाइफ में नहीं होती. सिर्फ वाटर इनटेक आपने अगर अपने जिंदगी में ध्यान रख लिया, आप 80% बीमारियों से बच जाते हो. अगर आपने 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज कर ली तो आपका बॉडी का जो हेल्थ है वो 80% टाइम बेटर रहता है बाकियों से. तो ये चीज देखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. और आई वुड रियली रिकमेंड कि आप परेटो प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझिए. आई एम गोइंग टू वेरी शॉर्टली टॉक अबाउट how you can apply Pareto principle in your UGC net preparation. But I just wanted to give you a quick overview about, what this Pareto principle is all about. Before I go on and talk about how you can use Pareto principle in your daily life, just wanted to tell you that from 17th September to 21st September, we are running a big billion sale. This is very similar to what Amazon does every September. So our team thought that why not, just like Amazon offers a very big sale every year, which is called the Big Billion Sale. Let us also come up with a Big Billion Sale offer for all the students, where we give lowest price of the year on our courses for UGC Net Paper 1 and Paper 2. And the offer is running from 17th of September to 21st September. Okay, and there are limited seats for this offer since we are giving crazy discounts. We cannot offer it to everyone out there. So we have limited seats. Once you enroll, if the seats are filled, then we might have to end the offer on 19th of September only. We would not be able to exceed it till 21st September because we have limited seats in the offer. So just want to also give you a quick overall view of our learning platform. So we have this online course for UGC Net Paper 1 and Paper 2 English Literature, which is there on our website, courses.arpitakarwa.com/learn. I've already logged in here, and once you enroll in the course, this is how the dashboard would look. So this is where, you'll find the courses. So if you look at the course, you will see that we have given module-wise lectures. There are 55 to 62 lectures, 50 lectures, 60. So all the 13 modules that we have listed on the website, which starts from British literature, American literature, European, Indian, post-colonial, literary criticism, literary theory, we cover from end to end in our course. So if you go to literary theory, you will actually see that we cover each and every theorist in literary theory. So once this is opening, let me show you what all things do we offer in the course. So you find all the 13 modules of UGC Net Paper 2. Then there is a separate test series for UGC Net Paper 2, where you will find that we have unit-wise mock test, where each age के mock test है. Elizabethan age के है, Jacobean age, Caroline age, romantic, modern, postmodern. Then we have American literature, post-colonial literature, Indian literature, criticism theory, सब पे mock test है. Then we have full length mock test also. So full 100 questions के भी mock test है, and there are 20 full length mock test in one set. Then there is 40 full length mock test in the second set, and then there is 7 full length mock test in the third set. So total 47 full length mock test है, and unit wise mock test भी है. This is just paper 2. So paper 2 का ये पूरा है. Then paper 1 के हर यूनिट पे you find lessons. सब में ट्रायल लेसन्स हमारे पास में अवेलेबल है. Once you go to the website and you just sign up, you can see all the trial lessons. आप lessons देख सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं. Only once you have given the trial lessons, you have watched the videos, trial videos, you have watched the PDF,
only then you enroll in the course. We would really want that only if you are satisfied with the content that we are giving, only then you enroll in the course. And then we have a test series for UGC NET paper 1 as well. Okay, so all the 10 units of paper 1 are covered along with the test series, and all the 13 modules of paper 2 are covered. So for example, this is module number 7, literary theory. You can see new criticism mein all these other writers. Then formalism, structuralism, post-structuralism, modernism, psychoanalytical, archetypal, feminism, Marxism, new historicism, queer theory, post-colonial criticism. All these topics are covered in detail. We are also offering video lectures, and let me tell you, we are the only institute in India who are offering video lectures. So for example, if I talk about Virginia Woolf's Room of One's Own, so this is how I am so sorry. Okay. So let me just open and show this to you. How does the video lecture look like? Okay. I think there's some issue with right. I think I pressed something because of which the, the, what do I say? The speed of the video has changed. I think unknowingly I have clicked on some button. Just a second. Yes, so this is what I've done. I have lowered down the playback speed, because of which it was loading very, very slow. This is how it looks. Okay, so I'll just reduce the volume. And this is how we are explaining the entire novel to the lighthouse, that this is how the character, and there is a voiceover that is going on in the background. What is the characters, who are the characters, who dies in the novel, and what all happens. And all of this is explained in the video. Then we have Brave New World. Let's see. So, okay. So this is how, we are explaining the entire Brave New World. Okay, so we are trying that through these animated lectures, we help you, understand the novel very, very quickly. We introduce the character, we talk about क्या हो रहा है, किस novel में किस character के साथ में क्या है, what is happening, what is not happening, so that it becomes very, very easy for you to absorb it, and it is so pictographic that it just stays in your brain. That is our entire intention. So this is how the entire course looks like. You get more than 1,000 video lectures. Entire course is now a video course. The lectures that I just showed, इस type के videos है. इन्हीं के PDFs भी आपको मिलते हैं, same इन्हीं character maps के साथ में, character diagrams के साथ में. Then you have full length mock test, unit wise mock test में भी detailed analysis है. And one more beautiful thing about the course is that if you go to any mock test and you try to give any mock test, it is exactly how the UGC NET exam is held. So if I click on take test, this is how the exam is held. And एकदम सेम पैटर्न है जैसे आपको यूजीसी नेट का एग्जाम में होता है, सेम उसी तरीके का हमने डिजाइन किया है ताकि आपको एकदम एग्जाम वाली फील आए. यू कैन गिव द टेस्ट, यू कैन सबमिट इट, आपको पूरा एनालिसिस आता है, आपने कहाँ पे क्या कितना कितना स्कोर किया है, क्यों स्कोर किया है, आप कहाँ पे रैंक करते हो, स्पीड, एक्यूरेसी, सब कुछ आपको दिखता है, कौन से एरियाज में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से में नहीं किया है. ऑल ऑफ दैट इज गिवन टू यू सो दैट you get a proper viewpoint कि आपकी preparation में कहाँ कमी है and what you can do. Okay, now moving back to tip number 3, which is Pareto principle in studies. So in tip number 2, we just saw Pareto principle क्या है. Now let's look at it and see how you can use it in your studies. So the first thing that you have to do is you have to list down all the topics that you need to study. Okay, आप पूरी एक list बना लीजिए writers की. Maybe you can refer to the list that we have given in our course. This is the entire list. ये पूरा 13 modules का जो list है, this is exactly what you need to study. Now, इसमें से you have to mark 20% topics which you think are extremely important. Any 20% topics just from that entire list of writers that you have prepared, 20% topics mark कर लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा important है. Delete all the 80% topic, research methodology, English in India, सब जो छोटे छोटे topics है जो इतने important नहीं है, इन सबको delete कर दीजिए.
सिर्फ वो 20% टॉपिक्स जो आपको लगता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिपीटेडली हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उसकी लिस्ट बनाइए एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. आई टेल यू हाउ. सो परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है, 20% एफर्ट डाल के आप 80% रिजल्ट ला सकते हो. अगर आपने पूरे सिलेबस की लिस्ट बनाई और उनमें से सिर्फ 20% टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो आप 80% मार्क्स ला पाओगे इन यूजीसी नेट. आई एम नॉट किडिंग. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां फंस जाते हैं. वो एमएच एब्राम्स पढ़ रहे हैं कि लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, वो पढ़े जा रहे हैं दलित लिटरेचर, वो पढ़े जा रहे हैं इंग्लिश इन इंडिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और वो सारी ऐसी चीजें जो 80% आपका टाइम खाती है, बट रिजल्ट आपको सिर्फ 20% जितना देती है. आई एम टेलिंग यू टू डू एग्जैक्ट ऑपोजिट. Find out a list of 20% topics which are extremely important for any net aspirant to cover, and delete all the 80% topics from the syllabus. Just focus on completing those 20% topics in the next 3 months, and you can easily secure 80% marks. और actually अगर आपको पता हो तो आपको secure सिर्फ 65% marks करने हैं. You don't have to secure even 80% marks because general की cut off for JRF is 65%. So अगर आप 20% topics को focus करते हैं तो आप 65% मार्क्स आराम से ला सकते हैं. बट फोकस करने का मतलब ये है, नंबर वन, जो मैंने आपको कहा कि यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज. कोई भी एक बुक, कोई भी एक वेबसाइट या कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप फॉलो करिए एंड सिर्फ उसी से पढ़िए. उसमें से भी सिर्फ 20% टॉपिक्स को पहले कवर करिए. आप अगर 1-1.5 महीने में कर पाते हैं तो वेल एंड गुड. वो कवर करने के बाद में उसे कम से कम 3 बार आप रिवाइज करेंगे. जो भी आपने पढ़ा है उसे 3 बार आपको रिवाइज करना है, and you are done with your preparation. It is an extremely crucial thing. I hope you will be able to understand the gravity of this tip that I am sharing with you. Another interesting thing that I would want to talk about is the Pomodoro technique. ये मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में और बता रखा है that आपको दिन भर में, आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं पढ़ना है. आपको स्लॉट्स में डिवाइड करना है अपना दिन. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी पढ़ने बैठे, it is right now 3 o'clock, 3 o'clock in the afternoon. So आप 3 बजे से 3:50 तक आप पढ़ते हैं for 50 minutes. You have to keep your phone on silent. Silent का मतलब ये नहीं है कि फोन साइलेंट पे रखा और टेबल पे रख दिया, बिकॉज अगर नोटिफिकेशन आएगी तो ये बजेगा. आपको इसे साइलेंट पे करके अपने बैग के अंदर डाल के बैग को अलमारी में रख देना है. यू डोंट हैव टू पिक अप योर फोन इन दिस 50 मिनट्स. 10 मिनट का जो ब्रेक आप लेंगे 3:50 टू 4 o'clock, 10 मिनट तब आप फोन को निकालिए, आप 10 मिनट चेक करिए. आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, व्हाट्सएप स्क्रॉल करना है, आप करिए. एंड उसके बाद वापस से उसे साइलेंट पे करके बैग में डाल के अपनी अलमीरा में रख दीजिए. कीप योर फोन अवे, साइलेंट एंड अवे फ्रॉम योर साइट. आपके सामने टेबल पे नहीं होना चाहिए. नो वन विल डाई इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू देयर मैसेजेस. 1 घंटा अगर आपने किसी का मैसेज नहीं देखा तो दुनिया यहां से वहां नहीं हो जाएगी. नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी सोते हैं रात में 1 घंटा. जब वो सोते हैं तो दुनिया नहीं खत्म हो जाती, इंडिया में भूचाल नहीं आ जाता है. ठीक है, तो आप उनके कंपैरिजन में देश का थोड़ा कम ही ध्यान रख रहे हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट सो मच. दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल. पोमोडोरो टेक्निक यूज करिए ताकि जो 20% टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं आप उसे पूरी शिद्दत के साथ पढ़ पाए. एंड इसी से रिलेटेड एक टिप है विच इज स्टार्ट मेकिंग अ लॉगिंग शीट. व्हाट इज दिस? नाउ लॉगिंग शीट इज वेरी सिंपल. आपको अपने दिन में एक पेपर पेन लेना है, उसके अंदर आपको इसी टाइप की शीट बनानी है. यू हैव टू राइट स्टार्ट टाइम, एंड टाइम एंड टॉपिक्स कवर्ड. पूरे दिन में आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं, हर घंटे जब भी आप पढ़ रहे हैं, दिस माइट बी 10 AM, आप अगर 10-15 से पढ़ने बैठ रहे हैं तो यू कैन राइट 10-15 AM एंड 11-15 पे आप खत्म कर रहे हैं. यहाँ पे आपको लिखना आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, सो दैट बाय द एंड ऑफ द डे you know that what you have covered, how much you have covered and how much time have you wasted. हो सकता है अगर आप अपना फोन अपने पास रखते हैं एंड 10-15 से पढ़ना चालू करते हैं, 11-15 पे आप देखेंगे कि आपने आधा पेज पढ़ा है किसी बुक का. Why? Because you were scrolling on this device for 35 minutes or 40 minutes. So by maintaining this logging sheet, you will understand आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो. I would even go a step further and tell you कि कल से आप जब सुबह उठते हो,
तब से लेके रात में सोने तक का हर एक घंटे को लॉग करिए। आप सुबह 7 बजे उठे हो, स्टार्ट राइटिंग 7 to 8 p.m., 7 to 8 a.m. What did I do? I just brushed my teeth and I drank 2 glasses of water. That's it. Then 8 to 9 मैंने क्या किया? I went to bath. 9 to 10 क्या क्या, हर चीज लिखिए। आप जब रात में अपनी ये शीट देखेंगे, यू विल रियलाइज कि आप अपना कितना समय वेस्ट कर रहे हैं। आपने सुबह 1 घंटे में अगर सिर्फ ब्रश किया है एंड सिर्फ मे बी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर पिया है, दैट मीन्स आपने 5 मिनट का काम के लिए 1 घंटा लगाया है। बाकी 55 मिनट आप क्या कर रहे थे? सो बाय लॉगिंग, कीपिंग अ लॉगिंग शीट, you will understand that how much time are you wasting and how much time do you have. A lot of people say, that I don't have time, I don't have 4 hours to study. I am telling you, if you prepare this logging sheet, no matter how busy that person is, he can come up with 4 hours in a day and he can study. आप ट्रैवल टाइम हो, आप रात में लेट पढ़े, आप सुबह जल्दी उठे, किसी भी तरह आप वो 4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, जो आप अदरवाइज नहीं निकालते, जस्ट बिकॉज आपका दिन इतना स्कैटर्ड है कि आपको पता ही नहीं होता है कि क्या आप वो टाइम यूज करके कुछ और कर सकते हैं। इसीलिए माय वेरी सिंपल रिक्वेस्ट वुड बी, कल सुबह से एट वट एवर टाइम यू गेट अप, keep making a logging sheet. Keep logging your details. It is not going to take more than 15 seconds for you to log what have you done. No matter if you've just taken a bath, right? कि आज मैंने 10 से 11 बजे तक I've just taken a bath, or I've just done this 2 3 things. And at the end when you sleep, just before going to the bed, just check and see that was there anything that I could have done to save more time or to study for longer hours. Was there any time in my day? Could I have managed my day in a better way? Okay. And last but not the least, one very, very important thing that I would want to suggest to every one of you out there. So, if you write this on YouTube, you will find there is a video that I have made, Exam Success Meditation. It's a 4-year Purana video, and it is a 8-minute long video. I would want each one of you who is feeling anxious, who is feeling stressed out, to do this meditation every day. If you have YouTube app, you can just download this video in the app. Every day in the morning when you wake up and you've taken a bath, please, please, please watch this video every day. Just close your eyes and meditate on this video. I can't tell you how many students have gotten benefited from this video. उनका anxiety कम हुआ है, उनका concentration focus extremely ज़्यादा बढ़ा है, just because they have started diving deep into their subconscious. They've started taking power from their subconscious. बोला जाता है कि हमारा 97% brain is subconscious mind and only 3% is conscious mind. So अगर हमने 97% brain को फाइन ट्यून कर लिया तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. All the big businessmen, be it Warren Buffett or if you talk about Narayan Murthy, or no matter whosoever you talk about, all these people dive in deep into their subconscious to get strength from there, and then they do wonders in the world. So I would want you all to follow this exam success meditation. It is a very, very effective meditation. I've made it with a lot of love and a lot of belief that my students are going to get benefited out of it. So please watch this meditation every day. Every day you do it, and I can't tell you how successful you can get just by practicing this one thing. Okay, so with that note, I've come to the end of this presentation. But before I end the session, I would like to take a few questions from you guys. So let me just check my chat box, and I would want you guys to put your questions. Okay, so Mariam says, is Wikipedia, Spark Notes, Clip Notes, Flickcharts enough for novels, poems, and drama? Mariam, yes, they are definitely enough. But the problem is that, again, you are using a lot of sources. As I said, that limit your resources. Any one website you can follow, that would be more than enough. Just one website if you can follow, that would be really, really enough for,
the preparation, the more diverse you go, the lesser time you will have for revision. Okay, any other? Um, Anukriti says, ma'am, please tell the division of time for paper one and two when major portion of paper two is almost complete. So if you've completed paper two, Anukriti, then I think that every day, if you can devote 2 hours to paper one, it would be sufficient. 2 hours, that means, see, I always go by the fact that, if you look at paper one, okay, so let me just tell you something. So in our course, what I generally do and what I recommend students is that we have 20 lectures for paper one. I always say that for each unit of paper one, you should just have 20 lectures. So every day, if you can complete 5 lectures, ओके 15-15 मिनट्स के लेक्चर्स है, 5 लेक्चर्स आपने कंप्लीट करे, जिसमें आपने लेक्चर सुना भी है, आपने उसे याद भी कर लिया है. सो विद इन 4 days यू कैन कंप्लीट 1 unit. And 10 units है 40 days, that means 1 month 10 days में you can complete the entire syllabus for paper 1. So I think yes, 2 hours for paper 1 would be enough. Ramjeet says, ma'am, English literature classes का subscription लेना है. Ramjeet, you can just WhatsApp my team on the number. It is given in the in the description box of the video also. Otherwise, the number I'll just show you. This is the number 7976603731 is the number. You can just put your queries and questions to them. जो ये big billion sale that I'm talking about, we just have limited seats because we are offering our courses at literally the lowest price of the year. We haven't offered such big discounts on paper one and paper two ka bundle course, where you get not just paper one, but you get entire paper one, paper two along with test series. So आपको literally exam तक और कुछ भी prepare करने की जरूरत नहीं है. Study Arena says, ma'am, I'm doing MA from distance education from Shubharti University. Can I give net paper? Yes, even if you're doing MA from distance, you can definitely give net paper. No problem in that. You just have to take care that you get 55% or above in your masters. So you can sit in the first year, just ensure that dono year ka aggregate should be more than 55%. Mariam says, does this 4 hours need to be in consistent form, or can we break it in 2 hour schedule? Absolutely, Mariam. You can break it in 4 hour schedule also. That is not a problem at all. Just in total 4 hours देने हैं. That's it. And मैंने एक syllabus और share किया था. If you guys have attended my previous YouTube live, जिसके अंदर I have given a detailed syllabus कि आपको किस तरीके से अपने days को break करना है. If you don't have it, you can just WhatsApp my team. They'll share that syllabus with you. Sandeep with Ankita, there's a question. Paper one, environment lessons sufficient or current affairs also include in environment? Again, so Sandeep, one thing I have just mentioned here, 20% effort करना 80% result के लिए. Okay, अगर आप करंट अफेयर्स करने लग गए तो वो 80% एफर्ट हो जाएगा एंड यू जस्ट गेट 20% रिजल्ट. सो स्टे अवे फ्रॉम करंट अफेयर्स, जस्ट डू द स्टैटिक पोर्शन एंड गेट डन विद इट. हमें 65% स्कोर करना है, हमें 100% स्कोर नहीं करना. नेट का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, उसमें आपका गोल होता है कि आपको जो टॉपर्स हैं उनसे आगे भागना है, सबसे आगे नहीं भागना. आज अगर एक टॉपर 68% मार्क्स ला रहा है तो आपको 69 लाने हैं, आपको 100% नहीं लाने. इसलिए हर क्वेश्चन आप सही करेंगे, इस भागने में, इस दौड़ में मत रहिए. ओके मैम, it's possible to pass if we start now. Absolutely, Mary, it is possible to start, to pass if you start now. I have just mentioned here that focus on 20% topics which are extremely important. I'll tell you what are these 20% topics. If you can just complete British literature and literary theory and criticism, these 3 modules you complete, you finish before the exam, revise it twice, and you can score 65% no matter what happens in net exam. Never give up says, ma'am, how many questions from British literature? Approximately 50 to 60 questions are directly asked from British literature. तभी मैं बोल रही हूँ, अगर British literature, literary criticism and theory ये 3 यूनिट कर लिया, 80% कोर्स हो गया है आपका. बाकी सब यूनिट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है.
Can I appear in net in MA first semester? Absolutely, you can appear in net in MA first semester. MA में आपने जैसे ही एंटर कर लिया तो आप नेट दे सकते हैं. Mariam, I'm currently preparing according to the timetable you shared with us last time. I've made a list of writers I'm focusing for September. Very helpful. Thank you. Great. Great to know, Mariam, that the timetable was helpful. Study arena, I've already answered your question. You can appear for net in the first semester of MA. So I think the questions are done and we are also running out of time. So I would want to end the session right here. Just want to wish all of you all the very best for the preparation. And I'm very, very hopeful that if you go by these three tips, that is to restrict your resources, using Pareto principle, and using the Pomodoro technique, you can absolutely clear net exam. For any more questions, any more queries, feel free to put that in on WhatsApp on the number 7976603731. You can also find this number in the description box of this video. So with that note, I would like to take your leave. That's it from my side for this video lecture. I'll meet you very soon in the next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature, and stay tuned to Arpita